Hello and welcome. You're watching the NewsTrack. I'm Rahul Kanwal. The biggest story, the biggest concern in North India, especially around the national capital region, the menace of pollution back at its worst. I'll be putting some very tough questions to the Delhi Environment Minister Gopal, trying to do more to fix the problem of pollution, trying to draw public attention, government attention to this emergent crisis is my top focus on the NewsTrack. Delhi disappears. Smog envelops national capital. Stubble smoke turns NCR into gas chamber. Citizens choke, blame game begins. कहाँ है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा उत्तर भारत में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर की भाजपा की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। But what about past promises? केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगली साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। Who will guarantee our right to breathe? Big focus on NewsTrack. Gasping, bleary-eyed, sniffling. That's how me and several of us in the national capital region are feeling. It's the same story every year. Farm fires from Punjab, in large part, and Haryana to some extent, continuing to choke Delhi and the neighboring regions. The governments seem busy with their own set of priorities, whether it's electioneering in the 5 poll-bound states, whether it's dealing with investigative agencies and having to answer questions to the Enforcement Directorate. Dealing with the menace of pollution isn't as much of a priority as it should be, which is why our right to breathe isn't #1 top focus. The national capital region turns into a gas chamber. Delhi's air quality plummeted to the hazardous category on Friday. The air quality index, or AQI, in many areas of Delhi and its suburbs breached the 400 mark, entering the severe category. The city's 24-hour average AQI was 655. In neighboring Noida, the figure stood at 678. आज आप हालात ये देखिए, नवंबर के तीसरे दिन स्मॉग की चादर ने इस तरह से इस पूरे इलाके को ढक लिया है कि भारत मंडपम के बिल्कुल करीब होने के बावजूद मंडपम आपको दिखाई नहीं देगा। नटराज की मूर्ति स्मॉग की चादर में, धुंध की चादर में ढकी हुई है और उसके सामने का फाउंटेन भी साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है। With air pollution reaching hazardous levels, stage 3 of the graded response action plan has kicked in. ग्रेड 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। All government and private primary schools in Delhi are closed for 2 days. BS3 petrol and BS4 diesel vehicles are barred from roads. Non-essential construction work is also banned. With pollution levels spiking, the BJP has trained its guns on Arvind Kejriwal government. Party spokesperson Shehzad Poonawalla worked out wearing gas mask. Our health is at risk. It's a health emergency. And today the question is that just like the smog tower, which was constructed at 23 crore rupees, on which we are spending 10 lakh rupees per month, it's been shut for 8 months. Mr. Kejriwal must tell us that why is this Delhi smog tower, if it was effective, Gopal said 70% AQI will come down because of this, why is it shut today? If it is going to be shut when the crisis is there, then what use is it serving? The all too familiar blame game over pollution also has started. सभी प्रदेशों में वायु गुणवत्ता का जो है आयोग बनाया है,
उस आयोग के द्वारा बहुत हद तक हम लोगों ने कंट्रोल किया है। जो कोयले का एनटीपीसी इत्यादि जितने भी हैं, कई फैक्ट्री को भी वहाँ बंद करना पड़ा है और धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया जारी है। कहाँ है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा उत्तर भारत में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर की भाजपा की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हरियाणा में जो भाजपा की सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो केवल बयान देते हैं। भाई मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि पहली बात ये समझना जरूरी है कि प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है। एयर सेट की समस्या, ये सारा रिसर्च आ चुका है। एयर सेट को ठीक करना है तो सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। The worst may be yet to come. Weather experts have warned the pollution levels will remain high for the next 10 days. With Amit Bharadwaj, Bureau Report, India Today. गोपाल राय जी, स्वागत है आपका। भगवंत मान जी की सरकार ने 16 मार्च 2022 में शपथ ली थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 साल 7 महीने 18 दिन 597 दिन हो चुके हैं पंजाब में सत्ता में आने के बाद। आपकी पार्टी का वादा था कि अगर आपकी पंजाब में सरकार बनेगी तो आप फार्म फायर्स को एकदम रोक दोगे और दिल्ली में प्रदूषण को कम करोगे। आज सुबह का जो डेटा आया है वो बताता है कि एनसीआर रीजन में 44% जो पोल्यूशन है, 44% ऑफ द टोटल पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन इज बिकॉज ऑफ फार्म फायर्स। आप क्यों नहीं इनको रोक पा रहे हो सर? व्हाई आर वी वंस अगेन बैक इन द सेम सिचुएशन? व्हाई आर वी ऑल डाइंग बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन? पहली बात तो है कि राहुल जी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है जो बात आपने कही। पंजाब में इतने कम समय के अंदर केंद्र सरकार ने जो डेटा रिलीज किया है, 50% से ज़्यादा पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं और वो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो दिल्ली के अंदर कल से जो प्रदूषण की स्थिति बढ़ रही है, उस प्रदूषण की स्थिति में दिल्ली के आसपास सराउंडिंग एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण की गतिविधियां चल रही हैं उसकी वजह से बढ़ रही है, जिसमें पराली की भी है, जिसमें व्हीकल पोल्यूशन भी है, जिसमें डस्ट पोल्यूशन भी है, जिसमें बायोमास बर्निंग का भी पोल्यूशन है। अभी नॉर्थ वेस्ट की जो हवा है अभी नहीं चल रही है और जो प्रदूषण का स्तर पंजाब में 50% पराली जलने से कम हुआ है। मुझे इस बात का भरोसा है कि वहाँ सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको कम किया जाए। लेकिन पंजाब अगर नॉर्थ वेस्ट की हवा तेज होगी तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे पड़ना ज़्यादा शुरू होगा। अभी हवा की गति जो है एकदम ठहरी हुई है पूरे उत्तर भारत के अंदर। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आपके स्क्रीन पे आप देखिए कि मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट कह रही है दिल्ली में जो सबसे प्रदूषित इस समय जो जिले हैं, 52 जिले हैं, उन 52 जिलों में से 20 जिले केवल हरियाणा के हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर एक सेकंड में आपको रोकूं। वन सेकंड गोपाल राय जी, गोपाल राय जी, मैं आपको और हमारे दर्शकों को इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का वो मैप दिखाना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि ये फार्म फायर आ कहां से रही। क्योंकि आप देखिए कुछ भी आंकड़ा ला सकते हैं, सैटेलाइट की इमेजेस और हमारी जो डेटा एनालिटिक्स हैं वो वाकई में सच बताती हैं। अब आप ये देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे दर्शकों को बहुत ही गौर से दिखाएं, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आया हूँ। इस वक्त आज सुबह का ही अगर हम हिसाब लेते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा है कि इस वक्त जब ये शो चल रहा है पंजाब में 1668 फार्म फायर्स पंजाब में इस वक्त हैं। और अगर आप इस नक्शे को देखें, मैं चाहता हूं कि हमारा कैमरा थोड़ा जूम करे, यह है पंजाब। हर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में फार्म फायर ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। फरीदकोट में 81, फतेहगढ़ में 80, फिरोजपुर में 186, होशियारपुर में 13, जलंधर में 66, लुधियाना में 80 फार्म फायर्स इस वक्त चल रही। जो आप बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, हाँ है प्रॉब्लम, हरियाणा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राजस्थान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो कुछ हद तक फार्म फायर्स की मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ये बहुत कम है सर। कॉन्सेंट्रेशन जो है फार्म फायर्स का वो आपके राज्य में पंजाब में है, और वहां पे दिल्ली के सीएम हो या पंजाब के सीएम हो, वो तो संगरौली में मध्य प्रदेश में कैंपेन कर रहे थे। उनका ध्यान तो इस वक्त पंजाब की खेतों में होना चाहिए फार्म फायर्स को रोकने के लिए।
राहुल कुंवर जी, फिर मैं विनम्रता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साल जो फार्म फायर हुए हैं, आपको आपके पास ये आंकड़ा है पिछले साल कितने थे? हाँ है मेरे पास आंकड़ा। इसका आंकड़ा है आपके पास पिछले हाँ, साल हाँ। इस समय कितनी पराली जल रही थी? करेक्ट सर, कितनी मेरे जल पास रही थी? आंकड़ा है। आप नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिछले साल आप सही कह रहे हैं कि इस साल की तुलना में आप ज्यादा। बताएं, अगर आंकड़ा है तो मैं बताएं, बता रहा हूँ ना, पिछले इस समय साल 2 पराली कितनी नवंबर जल रही को, थी? पिछले साल 2 नवंबर को 3634 फार्म फायर जल रही थी। ये फैक्ट है। लेकिन सर दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वो तो जल रही है। इस साल का आंकड़ा है 1000। नो 1600। पिछले साल 3000 जल रही थी, इस साल कितनी जल रही है? पिछले साल 3634 जल रही थी, इस साल 1000। अरे बता रहा हूँ ना सर, मैं सच ही बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस साल 1668 जल रही हैं। देयर इज अ रिडक्शन, दैट इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। बोलोगे आप जो सच है वो बताओ ना। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, पर आप मेरे हो गया। नहीं खत्म कैसे हो गया? अरे कमाल की बात है सर, गुना यही बात कही कैसे नो सॉरी गोपाल राय जी, ये सही नहीं है। पोल्यूशन को कम करने सर, नहीं सर, आपको जितना करना चाहिए, जिस अर्जेंसी के साथ करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने मेरे को बताइए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के सीएम गए हुए थे संगरौली, दिल्ली सीएम गए हुए हैं संगरौली, मध्य प्रदेश में आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। 1000 आप बता रहे हो, अर्जेंसी के साथ काम हुआ है तभी तो कम हुआ है। 10 नहीं साल का सर, काम, उसमें फर्क है, 15 क्योंकि पिछले साल की दिवाली भी पहले आई थी। सब पोल्यूशन कम होने की एक वजह यह है कि पिछले साल की दिवाली अक्टूबर के बीच में थी। पिछले साल दोनों चीजें, पोल्यूशन आपका जैसे ही अगले हफ्ते दिवाली आएगी, पोल्यूशन 900 के ऊपर चला जाएगा। हम आएंगे राहुल जी, दोनों चीजों पे आएंगे। पहले आप फार्म फायर को आपने कहा, फार्म फायर पिछले साल कितना था और इस साल कितना है? मैंने आपको बताया तो सही, मैंने अभी तो बताया नहीं। आपने कहा हमारे पास डीकंपोजर है, हम डीकंपोजर देंगे किसानों को। 1000 हो गया ना? 1000 नहीं हुआ, 1668 है इस वक्त पे, 1000 नहीं हुआ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। इधर उधर मत जाओ आप। मैं कहां इधर उधर जा रहा हूं? 3000 था, इस साल 1000 हुआ या नहीं हुआ है? सर ये तो मैं खुद ही बता रहा हूं। अगर आप हमारी कवरेज देखें, इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट बार बार डेटा रख रही है। दैट्स नॉट द पॉइंट। इसीलिए मेरे पास तैयार थे पूरे आंकड़े और मैंने रखे भी अपने दर्शकों के सामने। बट दैट इज अ वेरी फैसाइल वे ऑफ लुकिंग एट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आपने कहा था कि आपके पास ये दिल्ली का बायोडिकम्पोजर है, आप पंजाब में लेके जाएंगे, पंजाब के किसानों को आप बायोडिकम्पोजर देंगे, बायोडिकम्पोजर दे के फार्म फायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1668 फायर्स आर 1668 फायर्स टू मेनी। ये अभी भी बहुत ज्यादा आग जल रही है सर। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने आपसे यही बात निवेदन किया, राहुल जी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो आप सोच के आए केवल उससे तो डिबेट नहीं होगी ना, बात नहीं करेंगे। मैंने एक फैक्ट रखा, पिछले साल जो पोल्यूशन फार्म फायर थे वो इस साल कम हो गए हैं, नंबर 1। जो बचे हैं उसको भी कम करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, जो आज दिल्ली के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, अभी साइंटिस्ट का कहना है कि जो नॉर्थ वेस्ट जो हवा का रुख होगा वो अभी वो नहीं है। अभी जो सारा जो कुछ आप देख रहे हो, मैंने कहा, अभी मैंने आपको एक आंकड़ा दिखाया, अभी ये आंकड़ा आप देखो, ध्यान से दिखाओ आप अपने दर्शकों को, ये आंकड़ा क्या कह रहा है। जो सबसे पोल्यूटेड सिटी हैं उनमें से 52 में से 20 हरियाणा में हो रही हैं, 2 पंजाब में हैं। अभी जब हवा का रुख नॉर्थ वेस्ट का होगा तो पंजाब के फायर का भी इंपैक्ट दिल्ली तक आएगा। इस चीज को थोड़ा समझने की आप कोशिश करो। सर आपने कहा था कि आपके पास ये आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। मैं आपके लीडर्स के साथ पंजाब में कैंपेन ट्रेल पे था, जहां पे आपने कहा नहीं, मेरा वो बताएंगे ना आपको। सर वो तो सही है, लेकिन मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, और आपने वादा किया था कि ये बायोडिकम्पोजर आप लेके जाएंगे, पंजाब के किसानों को बायोडिकम्पोजर देंगे और बायोडिकम्पोजर के बाद फार्म फायर बंद हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, अरे 1 साल में सारा फार्म फायर थोड़ा बंद हो जाएगा राहुल जी। इसने कहा था कि सारा बंद हो जाएगा 1 साल में। नहीं, आप ही ने कहा था कि आप आओगे 1 साल में। सर आपके कैंपेन ट्रेल के हमारे पास भाषण है जिसमें आप कह रहे हैं कि जैसे ही हम बनेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूर मुश्किल नहीं है, हम इसको कर देंगे। सर ये कम तो बहुत सालों से हो रहे हैं, ये तो पहले भी जब अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जब चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी वो कहते थे कि चीज को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हो? मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जितनी इमरजेंसी सिचुएशन है, जितनी आपातकालीन परिस्थिति है, उस अर्जेंसी से आप लोग नहीं डील कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन, आप
आपका अटेंशन जो है, आपका अटेंशन पोल्यूशन है या पंजाब अरविंद केजरीवाल को केवल गरियाना है? भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है बात। सर, मैं गरिया किसी को नहीं रहा हूं सर, मैं अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से एक्शन क्यों आपका नहीं कर रहा हूं? मकसद क्या है सर, गरियाना किसी को भी मेरा टॉपिक मकसद पे नहीं कहा है। हो? 3 बार तो मैंने बता दिया कि पिछले साल 3000 थे, इस साल 1000 हो गए। आपको ये तो समझ में मैंने ही नहीं आ रहा है? बताया सर, ये तो मैंने ही आज बताया जो ना। पूरे दिल्ली के अंदर सीएनजी की बसें चलती हैं। देखो आप, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में सीएनजी की बस चलती है, 900 इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में चला रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल की बसें दौड़ा रही है भाजपा की सरकार। आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। पूरे एनसीआर के अंदर भट्ठे चल रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। पूरे एनसीआर के अंदर जो है जनरेटर सेट चल रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। पूरे दिल्ली के एनसीआर के अंदर चारों तरफ जो है डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। फैक्ट पे तो बात करो भाई। सर, हम जो facts हमारी पे ही जिम्मेदारी बात है कर हम रहे हैं। निभाएंगे, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जो राज्य हैं वो राज्य है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। सर, वो मैं आपसे भाजपा की बार सरकार बार के दिल्ली राज्य के हैं। बायो डिकम्पोजर की बात कर रहा हूं, आप उस पर आ ही नहीं रहे। देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। फार्म फायर कम हुए तो मैंने खुद ही आपको बायो डेटा दिया। डिकम्पोजर का दिल्ली के अंदर छिड़काव हो रहा है। सर, आपने बोला था पंजाब में लेके जाओगे, इसको ले जाते ही प्रॉब्लम 1 साल में सॉल्व हो जाएगी। तो आप ही के लोगों ने कैंपेन ट्रेल में कहा था, वही मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? पंजाब में जहां जरूरी है वहां छिड़काव हो रहा है। ये जो 3000 का 1000 हुआ है, सारा कार्रवाई हो रही है, तभी तो कम हो रहा है। सर, कई सारे जो मेजर्स हैं जो सजेस्ट किए गए, क्योंकि 5000 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे अगर आप वाकई में स्टबल बर्निंग से डील करने के लिए बायोडिकम्पोजर स्प्रे करते हो और अगर वाकई में उतना कारगर है जितना कि आपका दावा है, तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत हद तक और सॉल्व हो जानी चाहिए थी। राहुल जी, आप पता नहीं क्यों अटक गए हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए शो कर रहे हो तो आप दे लो। अरे सर, मैंने तो गाली एक भी नहीं दी सर, मैंने गाली तो अभी एक भी नहीं के दी। लिए डिस्कस करना है तो उसको डिस्कस कर सर, लेते हैं। किसी को भी गाली देना मेरा ना तरीका है ना मेरा स्टाइल है। मतलब तब से आप अटक क्यों गई? आपकी सुई में समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, क्योंकि कई सारे तैयार नहीं हो आप। नहीं सर, जैसे कि भाई आज जो प्रदूषण है पूरे उत्तर भारत में है, और अगर आप उत्तर भारत के कारण क्या है उसको समझने की जरूरत है। उसमें हमारा क्या रोल है, हमें करने की जरूरत है। केंद्र की सरकार का क्या रोल है, उसे करने की जरूरत है। भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या करना है, उसकी जरूरत है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या करना है, उसकी जरूरत है। सभी राज्य की सरकार सभी मिल करके प्रयास करेंगे, तभी ये प्रदूषण की समस्या हल होगी। अरविंद केजरीवाल को और पंजाब को केवल गरिया करके तो नहीं समस्या हल होगी। पंजाब अपना काम कर रहा है, 1000 जो है उसको भी और कम करने की कोशिश करेंगे और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, 21 अक्टूबर को मीटिंग होती है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को यह कहा जाता है कि आप पार्किंग चार्जेस बढ़ा दो ताकि लोग अपनी गाड़ी लेके कम बाहर निकलें। आप लोग उसको अग्री नहीं करते हो। आप कड़े जो स्टेप्स हैं वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं ताकि पोल्यूशन अब कम हो? क्योंकि अभी अगला हफ्ता बहुत खतरनाक रहने वाला है। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं जनता के सवाल जनता के प्रतिनिधियों से पूछ रहा हूं। सर राहुल जी, देखो राहुल जी, अगर आप एजेंडा लेके बैठे हो तो मुझे डिस्कस नहीं करना आपसे। आपको डीजल के चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। दिल्ली जितना काम कर रही है, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन जिन लोगों ने आपको लिस्ट दी है उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री से, हरियाणा पंजाब के पर्यावरण मंत्री से भी एक बात कर लो। आप जो दिल्ली कर रही है उतना ही करवा दो आप वहां पे। But sir, 35% of the total contribution is coming because of stubble burning, and a large part of the stubble burning is happening in Punjab, where आपकी सरकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसको immediate basis पे, ये बात आपकी सही है कि पहले की तुलना में फार्म फायर्स कम हुए, जितने फार्म फायर्स चल रहे हैं उनको कम करने के लिए immediate basis पे आप क्या कर रहे हैं? वहां पे इमीडिएट बेसिस पे भी टीमें फील्ड मॉनिटर कर रही हैं। वहां पे इमीडिएट बेसिस पे भी सारी मॉनिटरिंग हो रही है कि इसको और कैसे कम किया जाए। 3000 का 1000 का मतलब कितना % हो गया है, तो आप भी गणित जानते हो। सर, अब 3000 से 1000 नहीं हुआ, it's 1668. It is a reduction, no doubt, but still a lot more needs to be done. मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ये तस्वीरें हैं स्मॉग टावर्स की। ये स्मॉग टावर बनाए गए, हमारे जब कैमरा वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि स्मॉग टावर चल नहीं रहे। दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ वो तस्वीरें। कई सारी चीज़ें हैं सर जो आप भी कर सकते हैं और थोड़ा इमीडिएट बेसिस पे। क्या ये बात सही है कि चूंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके नेताओं को काफ़ी बिजी रख रही है तो इतना ध्यान गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं दे पा रही है पार्टी, क्योंकि आपको लाजमी तौर पर अगर एजेंसियों के सवालों के जवाब देने तो आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा गवर्नेंस पे फोकस करने का? ये देखिए आप,
जो स्मॉग टावर्स हैं, स्मॉग राहुल टावर्स जी, आप गलत डिबेट अनयूज्ड कर पड़े। रहे हैं, आप गलत डिबेट कर रहे हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरी जिम्मेदारी है दिल्ली वालों के साथ मिलकर के दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए हम दिन रात काम करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भी सक्रिय हों, हरियाणा और यूपी के भी पर्यावरण मंत्री सक्रिय हों। पूरे उत्तर भारत में समस्या है और सभी मिलकर के काम करेंगे तो इसका समाधान होगा, और वो काम हम कर रहे हैं। सर मैंने तो सिंपल सवाल पूछा स्मॉग टावर्स के बारे में। स्मॉग टावर्स पे ताला लगा हुआ है, तस्वीर हमारे स्क्रीन पे है, ये तो आप ऑन करवा दीजिए स्मॉग टावर। स्मॉग टावर कहाँ लगा हुआ है दिल्ली में, पता है आपको? हाँ हमारे पास है ना, जो सीपी में लगा हुआ है। सीपी का स्मॉग टावर 24 मीटर हाई है, उससे कुछ हद तक 500 मीटर के रेडियस पे कहाँ लगा हुआ है स्मॉग टावर? कहाँ लगा हुआ तो आप बताएंगे ना, जहाँ है लगा हुआ है स्मॉग टावर। सर ये हमारे स्क्रीन पे है तस्वीरें गोपाल राय जी, आपका कैमरा गया है ना तो देख के आया होगा। वो ताला लगा हुआ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। गया था, देख के आया होगा ना कहाँ लगा है। मैं बता तो रहा हूँ, स्मॉग टावर जहाँ लगे हुए हैं लगा है। सर सीपी में ताला लगा हुआ है, स्क्रीन पे तस्वीरें आपको नहीं दिख रही क्योंकि आपके सामने ताला वाला कहाँ मिला आपको? सर मैं आपको तस्वीर चल रही है इस वक्त कैमरे पे, है ना, वो आपको दिख रही है जगह। नहीं वही मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ताला लगा है। मैं सीपी में आपको इसके बाद तस्वीर भेज रहा हूँ, हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं ताला लगा हुआ है स्मॉग टावर पे। दिखाई नहीं दे रहा है आपका। अच्छा ठीक है मैं भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए आप पहले तो स्मॉग टावर पे सर सीपी में ताला लगा हुआ है, तस्वीर हमारी स्क्रीन पे, इसको आप बाद में खुलवा दीजिएगा, इसको चलवाइए क्योंकि ये काफी पैसे से खर्च हुआ है। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इसको हाँ अभी तस्वीर में तो ताला लगा हुआ है सर, हमारी जब क्रू गई थी अभी आपने खुलवा दिया उस शो के बाद। ये तो बताओ आपके पास जो ये तस्वीर है कहाँ की है? स्मॉग टावर की, सीपी की तस्वीर है, दो स्मॉग टावर लगे हुए हैं, वहां पे ताला लगा हुआ है, बंद था। आनंद बिहार की आई आपके पास तस्वीर? नहीं ये बाबा खड़क सिंह मार्ग की तस्वीर है, वहां पे ताला लगा हुआ है। मेरा आपसे सर ये बाबा खड़क सिंह मार्ग की तस्वीर है, आप क्या सवाल खुलवाइए तो सही, चलवाइए तो सही सर। की रिपोर्ट नहीं मंगाए? नहीं अरे सर मैं बोल रहा हूँ जहां ताला लगा उसको खुलवाइए चलवाइए, मैं आपको कह रहा हूँ। आपको मैं वही बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनने की तो कोशिश आप नहीं कर रहे हो ना। आप वो पॉइंट ढूंढ के ला रहे हो। दिल्ली के अंदर 2 स्मॉग टावर लगे हैं, एक आनंद विहार में लगा है, उसका भी आप जो है ना वीडियो बनवा लो, नंबर 1। नंबर 2 खड़क सिंह मार्ग पे जो हमने स्मॉग टावर लगाया था, आपने भी सुना होगा, 1 साल पहले डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी बने, बिना कैबिनेट के डिसीजन के 8 महीने से उन्होंने पेमेंट बंद करके और स्मॉग टावर बंद करा दिया, कैबिनेट के बिना सूचित किए। जब से दिल्ली के अंदर ये नया कानून थोपा गया है, तब से कैबिनेट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, सरकार का कोई मतलब ही नहीं रहा। अधिकारी निर्णय लेकर के बंद करते घूम रहे हैं। उनको डायरेक्शन भी दिया गया कि खोलो स्मॉग टावर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिना सुप्रीम के आदेश के हम बंद नहीं कर सकते, उसको बंद किए बैठे हैं। अब मुझे ये बताइए सर, अगले 2-3 हफ्ते जब पोल्यूशन एकदम चरम पे रहने वाला है, आपकी सरकार क्या कर रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए? गोपाल राय जी जवाब दीजिए ना थोड़ा सा, क्या करेंगे आपके और क्या स्टेप्स हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए? गोपाल राय जी। गोपाल राय जी, गोपाल राय जी क्या स्टेप्स हैं आपके? Now the interesting thing is that he's getting agitated, trying to find some kind of insinuation or motive, casting aspersions. I'm asking questions, my job to ask questions. And yes, it cannot be contested that the number of farm fires is down, but it's been a declining curve for a very long time. So it's not come down just this year, it's been on a declining trend. But that doesn't mean that we are anywhere close to the problem being solved. So I think the ministers just got up and left, which is a bit unfortunate because he should have, can we just see if we can go back to him? Because he should have stayed and answered more questions, because this is a very, very critical period. This is can we see his image? Can we see that screen, please? I want to see that screen, please. Okay, so it's very unfortunate that he's got up and left. He's obviously on a very short fuse, but there are things that can be done. For example, the Aam Aadmi Party is known for being agitational. If they're truly agitational, go and do a dharna at that smog tower which is locked. If you think that the Delhi administration is not cooperating, then that's where they must push. Those are the locks that they must break, and that's what they need to do on a priority basis. And it is also absolutely correct to say that this is not a battle that any one party can fight by itself. This needs to be fought together. The central and the state governments need to work together to be able to do this. This is being fought in a very ad hoc fashion, and each can just stand up or sit down and blame the other,
and that unfortunately is not good enough. A terrible mess, a mess likely to get much worse in the next few days. We're slipping into a break. I'll have more for you when we come back on the other side. Stay with us. You are watching India Today, powered by Finest. Be Sustainable Change, a BNP Group company. Colors by Cola makes you wish everything was as vibrant. Colors by Cola makes you wish everything was as vibrant. Colors by Cola makes you wish everything was as vibrant. Colors by Cola makes you wish everything was as vibrant. Colors by Cola makes you wish everything was as vibrant. Hello and welcome. Over the past 3 weeks, we have discussed with some of the world's top experts the geopolitical implications of the Israel-Hamas war. But what is the likely economic fallout of the current military conflict, and what could happen to global growth and the energy markets if this war escalates? There are 3 broad scenarios that economists are modeling: a limited war between Israel and the Hamas, a regional war which goes on to include the Hezbollah, Syria, the Houthis in Yemen, and then a direct larger war which includes Israel and Iran in military confrontation. To talk about the implications of the conflict on the global economy, I'm joined on India Today's NewsTrack by one of the world's most widely tracked economic affairs commentators. Joining me live from London, Martin Wolf of the Financial Times. Martin Wolf, welcome. Pleasure to be with you. After we've discussed the global economic outlook, to give us a sense of the likely impact on India, I have noted economist Neelkant Mishra, chairperson of the Unique Identity Authority of India, the UIDAI.
So thank you very much, Mr. Mishra, for joining us as well. I want to look at some of the data sets put out by Martin Wolf and the other economists looking at the impact of the current crisis on the global economy. We'll start with oil prices because the Gulf region, a massive hub of oil reserves and production. So let's take a look at what the impact could be in three scenarios. One is the current scenario, the medium scenario, and a large scenario where Martin Wolf expects the Brent crude could potentially go up also to $160. So this is from the World Bank, three scenarios. Let me start by asking Martin Wolf to explain to us, and we'll start, Martin Wolf, with just the current confrontation between Israel and the Hamas. If the war were to stay restricted to a military confrontation between the IDF and the terror outfit Hamas, what impact do you expect on global economy? I think in that case, it would be immeasurably small. It really would be very insignificant. The only possible effect, in fact, we're seeing it to some extent, is that there will be still a generalized sense of uncertainty about possible escalation in various directions. And uncertainty is itself bad for the world economy. It affects people's willingness to take risk, financial markets, and so forth. We're not seeing anything very dramatic. It's probably nothing like the uncertainty about what the Fed is going to do, but it's something. So wars have some impact on sentiment, but I wouldn't expect the effect to be very dramatic. Let's come to the second scenario, which is the war escalating to include the Hezbollah, the likes of the Houthis in Yemen, Syria, so proxies of Iran, not Iran directly, but the proxies of Iran getting involved in a military conflict with Israel. How do you see that impact global economy? Again, I think the direct effect would be pretty small. The uncertainty would increase, and the uncertainty would increase because the fear of further escalation into the Gulf and to Gulf oil producers will become more significant. And people might take that into account in their decision-making, in markets and so forth. But the direct effect of this will be really very small. I mean, just to think of the hugely costly Syrian civil war, it had a very large humanitarian effect, huge numbers of refugees, political effects in Europe as the refugees came, but the economic effects were really very small. Let's now come to the third scenario, which is Iran directly in military conflict along with its proxies with Israel, which would potentially include the United States getting involved militarily as well in Israel's defense. How would that then larger conflict impact the global economy? Well, then starts, depending on how huge the effects are on oil production and exports from this region. The region as a whole, the Gulf, basically produces about a third of world oil. It contains half of world's reserves. And the Straits of Hormuz at the bottom are the choke point for exports. So if, and it does, as I understand it, wouldn't necessarily be incredibly difficult, somebody, Iran, for example, decided to stop the tankers moving, that would have a truly dramatic effect on the world economy, because the prices of oil might, as the chart shows, shoot up to very high levels, even considerably higher than those. Nobody really knows. It will be significantly more damaging than most of the oil shocks we've seen before. It could be like the first and second oil shocks of the 70s, and these were clearly very, very dramatic events. And of course, high energy prices affect the prices of everything, including the prices of food. So that's very important for developing countries. Particularly, the uncertainty would clearly affect financial markets very significantly too. And of course, if the worst came to the worst, this might even start involving, as you say, not only the United States, but even China and Russia, both of which are interested also in the region. So if the conflict spread in this way, and there are many different possible scenarios, it could become a very major global economic event.
Iraq's invasion of Kuwait in 1990 raised average oil prices 3 months afterwards by 105%. The Arab oil embargo of 1973-74 raised them by 52%. The Iranian revolution in 78 raised oil prices by 48% globally. Since then, though, there's a lot that's changed. There are more alternate sources of energy. There's more renewable energy as well, shale gas in the US and elsewhere. Therefore, there are some experts who say that you don't look at what happened during Iraq's invasion of Kuwait in 1990 to model what might happen now. Global energy markets have changed and therefore it needn't come down to a worst case scenario immediately. How do you look at that, sir? Well, I think it's a perfectly plausible argument, but it's sort of untested. We've undoubtedly reduced the intensity of the oil use in the world economy quite dramatically. I think it's declined by about 60% or so. So the intensity of oil use is diminished. But the concern I have, well, there are two concerns still. Almost certainly what we've eliminated were the easy uses of oil to eliminate. And so the fact that we use less doesn't necessarily mean it's less important, because what we are now using it for are in the sectors where it's really difficult to replace quickly. And the second, which is linked to that, it's the dominant transport fuel today. In the long run, we might imagine a quite different electrified world. But to move things around the world, we need petroleum. It's also very important for chemicals, but that can probably be done without for a little while. But the use of oil in our transport systems, every transport system, remains overwhelmingly dominant, and replacing that in the short run seems to me impossible. So if prices of oil were to increase dramatically, this would affect the transport systems and the economics of the transport systems, the profits of the transport system, the movement of goods, and therefore the cost of everything we move. And it would therefore have, in my view, a very big effect. Martin Wolf, please stay with me. Nilkant Mishra, the Indian economy has been poised for takeoff for a long time now. First, we had the Russia-Ukraine conflict on the back of the pandemic, which created uncertainty globally, had a shadow on India as well, and now the Israel-Hamas conflict. From your lens, as someone who's a key part of government and also a renowned economist on the outside, how are you seeing all of what Martin Wolf is saying about the impact globally pan out in the context of the Indian economy? Nilkant Mishra. So as Martin was saying, I think GDP and energy are very deeply intertwined, and India net imports 48% of its dense energy needs. So if energy prices globally start going up, then India will be very badly impacted. There is a way to quantify that. India net imports about 1.6 billion barrels every year. So every dollar per barrel is about 1.6 billion dollars. And in, say, the medium scenario, if the midpoint of that range is about, say, $25 higher than here, then we are talking about $38 billion just of higher oil imports. So the terms of trade become adverse. India starts paying $38 billion extra. That's about 1% of GDP, because our GDP is about $3.6 trillion. And some of that can be offset. So as you can expect, the subsidies can go up. Effectively, you're borrowing from the future to sustain current consumption, but nearly half of it will be passed through. Higher prices of plastics, higher prices of chemicals, fuel oil, industrial use stuff. And what also happens is that it's not just oil that goes up. Because oil is, if it's going shooting up that much, then edible oil goes up because there's biofuel blending. Corn starts to go up, fertilizer goes up. So if you add all of that up, the impact on the economy for a $25 per barrel increase could be around 1% of GDP. So there can be a substantial impact on GDP if oil prices do shoot up that much. And also, one is the quantifiable impact on growth. The other is the impact on the psychology of investors, of India Inc., on industrialists wanting to invest back in the Indian economy. We've also got variables like the election playing out, Nilkant Mishra.
in the few months to come. How do you think that might impact the animal spirits of industrialists inside and outside when it comes to looking at the growth prospects of the Indian economy and their own investment appetites? On that, I'm a bit less worried. See, the major reason why India's economy is doing so well is that unlike in the rest of the world, where the real estate market is turning down after a 10 to 20 year upturn, like Germany is turning down after 20 years, in India, we've seen a 10-year downturn in real estate, and it's just about starting to turn up. So we are starting to see double-digit volume growth in cement demand. We are starting to see power demand going up, tiles, PVC pipes, everything. So these trends do not fade very quickly. What has been happening also is that electricity demand, and we are starting to see after 10 years of chronic underinvestment in power generation capacity because of the excesses that happened a decade back, that we are now at the peak of the cycle. Like in September when heat waves were peaking, we actually had started seeing shortages of power. And therefore, it is necessary now for new investments in power generation. Higher prices of oil will actually accelerate the transition towards green energy and green hydrogen. So it actually could trigger new investments. It also, if you see what happened in Japan in the 70s, the higher prices of oil and given their external dependency drove an aggressive move towards improvement in energy efficiency. And so I don't expect this to be overall, creating a lot of negative mood in India. I mean, of course, I think sentiment will turn negative, but the terms of trade shift, in which case, you're paying a lot more for what you were, for the same volume of what you're importing, is something that I think will have an impact. But I think sentiment will not change dramatically. Martin Wolf, your sense of the impact of the conflict in the Middle East having on an economy like India's? Yes, I think what has just been said seems to me reasonably plausible. Of the large net oil importing economies, India is, I think, in a relatively good position to withstand the shock. The US, of course, uniquely among the really big economies, is not a net importer, and it's sort of a fortress. But we leave that aside. India's real estate cycle indeed has turned around. The financial sector seems, from what I've seen, I wrote about this in July, in pretty good shape. There seems to be a fair amount of animal spirits. It's a large country with a large domestic market. Trade is more important than it used to be, but not that important. So barring some really big global catastrophe, I would have thought India is in a pretty good position to survive. But all I would stress is these scenarios I put forward are very iffy. I think the small and medium one are pretty well defined. But if we do get into a situation when there is are major hostilities in the Gulf itself involving Iran, possibly be prepared to lash out at other countries in the Gulf, then the consequences could conceivably be a bigger disruption than we've ever seen before in oil flows. And if that happens, the global implications are getting to a territory we just haven't experienced. And it's a tail risk. I think it's a very small tail risk, but it's there, and one has to take this into account in one's planning, particularly for a country, a big country like India. Your colleague Gideon Rachman was with us yesterday, and one of the things he spoke about was the disconcerting similarities between what happened in June 1914 with the assassination of the Archduke in Sarajevo, and how, despite the global powers at that time not wanting confrontation, within a few weeks all the major European powers were at war, and then so was the United States, and then we had what's now called World War I. How much of a concern is that for you? How much of that hangs over the US, over the global economy, that if Iran and Israel were to be militarily involved, it may not necessarily just stay restricted there. There's also, in that axis of resistance, Russia, potentially even China, and it could get far more complicated. Martin Wolf.
It seems to me that that's obviously the worst scenario. And if you look at human history, one can never rule out the possibility of completely mad behavior in this sort of a tit for tat situation when neither side wants to back down. But my view is it's a very low risk, not zero, but a very low risk. The people leading the US and China are aware of it. Their vital interests are not at stake here to any overwhelming extent. They want to keep peace. War would be devastating for all parties. Nothing could be achieved by it. Remember, we have nuclear weapons. And I think Russia has enough on its plate right now in Ukraine, to put it mildly, not to want to get actually into another military confrontation, potentially with the US. So my guess is this is a remote possibility, is definitely not zero, but the plausible assumption is it will be avoided. One of the global headlines of the past several months has been the growing confrontation and competition between the United States and China. We're now seeing some signs of a thaw, with the White House confirming a meeting between President Biden and Xi Jinping later this month, even though the Chinese haven't spoken about it. How do you see a possible rapprochement, even if it's just very marginal, but nonetheless not a worsening of ties between the United States and China, impact the global growth story? Martin Bode. I think there's no question, my colleague Edward Luce has also written about this, that the Americans and I believe the Chinese are really quite keen to cool the temperature. And the way they're trying to do that is to generate a certain amount of precision about what they intend to do, what they don't intend to do, so that the sort of big loose words that have been used in the past about relations between the US and China disappear from the American debate, and the Chinese, they hope, will respond. And there's obviously a very powerful vested interest in both countries in this. This is a confrontation, if it gets significantly worse, that neither side is going to benefit from economically, let alone militarily. So I think it's very, very likely that we're going to see this turn into a manageable conflict. We're at an early stage of this. I still remember very, very well the Cuban Missile Crisis, and there were stages in the 60s when there were really big worries about the relations with the US and the Soviet Union, which were in many ways ideologically more confrontational. And yet they did manage to manage that peacefully, at least in terms of direct confrontation, and I expect that to happen again. Provided that's the case, there will be real economic costs from the decoupling, or the partial de-risking, as it's now called, of relations between the US and China, but barring actual military confrontation or a complete breakdown in economic relations, I think they will be manageable. Neelkant Mishra, from your lens, possible rapprochement between China and the United States, what impact might it have on India? India has been one of the beneficiaries, or at least tried to position itself as a potential beneficiary of the China plus one pivot in global supply chains that a lot of companies seem to be engineering. If China and the US are no longer at loggerheads in the way that they've seemed to be over the past several months, how does that impact the India story and the India pitch? So the strategic competition between China and the US is not getting over, right? So the fact that China wants to be the preeminent economy by 2049 and the US is saying game on is not going to change because Xi Jinping goes to California, right? This is a temporary cooling of temperatures. I think the strategic competition is not ending. The fact that most American corporates, because of what's happening in China, because of Chinese domestic policies, not just because of the US-China trade war, are now wanting to create alternatives, that's also not something that's going to change. I think the China plus one, and to the extent that India is benefiting from it, those trends, I think, will persist.
I think it's very unlikely that with one summit meeting or the spirit of Bali continuing, you will see a complete winding down of all the moves that have been made. So remember that they will remain strategic competitors. If there is a cooling of temperatures, if there is better discussion on multilateral issues, on global issues of climate change, of financing the green transition, I would say that this would be in India's interest. We will see the world thinking as one. We are already we are 18% of the world population. We would be among the, in any case, very badly affected by climate change. So if we see the two big economies, the two big powers coming together and thinking together on some global issues, that's in India's interest. Okay, there are two big elections. I just want to spend a little bit of time on them. Before we wrap up, I'll start, Martin Wolf, with you, talking about the potential impact of the US presidential elections on America's growth, depending on whether President Biden gets re-elected, if he were to actually contest, and what if Donald Trump were to come in. How, in your view, might that impact what's happening from an economic prism globally and particularly in the US? May I just say first, I agree completely with what Mr. Mishra said about the wider implications of the competition between the US and China, and that fits into the question you asked. I believe that the next election in the United States is among possibly the most important elections anywhere in my lifetime. The really big question is what it does to the US stance in the world, and to actually the functioning of US democracy. I believe that under Donald Trump, the US would become really significantly more isolationist, certainly significantly more protectionist. It would therefore withdraw from many of its overseas commitments, for example, in Europe, but also increasingly in Asia, with one crucial exception, the confrontation with China, on which he will focus, and where that will go, we really don't know. And of course, the election of Donald Trump will be the election of somebody who, let's be quite blunt about it, tried to organize a coup against the outcome of the last presidential election. That's a pretty massive fact. So I believe it's going to be very, very significant, very difficult for world trade, quite unpredictable for the world economy. The trade part will clearly be worse, but geopolitically, it will create quite enormous uncertainties about the future order. It is crucial to remember that to now, this may change, we live in the world that the United States created. And if the United States essentially abandons that creation, it repudiates that creation in many ways, we're going to live in a different world. Neelkant Mishra, in conclusion, there's a big election in India as well. The polls for the moment show Prime Minister Modi and the BJP in front. Elections are elections, you can't quite say till the fat lady sings. As India also goes into election mode over the next several months, how is that likely to impact governance and also, in your view, the impact on growth? Because a lot of key reform moves that someone like you would be pushing for kind of get pushed back because no government at this time, till it's certain that it's one, would ever want to try anything which is anything but populist. So see, the government, both the elected and the unelected parts of the government are very professional and very, very responsible. So I think whatever is in the country's interest will be done. And the uncertainties and whatever is happening at a domestic level, I think unlike, say, the US or maybe some parts of Europe, the international part of, or international relations are not yet a very major part of domestic policy and domestic debate. So in that sense, there is very little uncertainty on what India's direction will be. And I don't think the elections will distort that. Okay, I'll leave it over there for the time being. Martin Wolf and Neelkant Mishra for joining me and sharing your thoughts on the global fallout of the current military conflict and the potential implications for the India story. Thank you very much. I really enjoyed this conversation. For your sharp, incisive inputs, thank you very much. Thank you very much.
Great pleasure. Thank you. We'll slip into a quick break. I'll have more for you when we come back from the other side. Stay with us. Back in a moment. You are watching India Today, powered by Finest. Be Sustainable Change, a BNP Group company. Colors by Cola makes you wish everything was as vibrant. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that truly matter. Join India Today now on WhatsApp with the #1 election team as we gear up for the upcoming assembly elections. Scan the QR code on your screen now. Join India Today now on WhatsApp. Follow these steps. Open WhatsApp on your phone. Check for a new updates tab. Select Find Channel and type India Today. After finding the channel, tap the Follow button. दिल्ली में अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। नहीं, देखिए, जिस तरह से मौसम के हालात बदले हैं और पूरी तरह से हवा की स्पीड कम हुई है, टेम्परेचर डिप कर रहा है, ऐसे में अभी दिल्ली के अंदर एक स्मॉग की स्थिति पैदा हो गई है और उसको देखते हुए सरकार ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कम से कम दिल्ली के अंदर के जो सोर्सेज हैं उनको और कंट्रोल किया जाए, उनको कम किया जाए और उसको लेकर के आज से जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको जो है बंद किया जा रहा है। BS3 और BS4 की गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। तो इसलिए अभी से अब धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जो कठोर कदम होंगे वो सरकार उसको उठाएगी। You are watching India Today, powered by Finest. Be Sustainable Change, a BNP Group company. The chairperson says you've used unparliamentary language backed by the BJP MPs. Yeah. No, one second. Everything is transcribed. There's nothing secret. I have not used any unparliamentary language. Nobody has used any unparliamentary language. The chairperson was reading out from a script that had been handed to him. His line of questioning was
filthy. I am standing there. There are two issues. One is the NIC login. And we need to make this public. There's no rule 275 which is going to protect anybody else. You want to expel us all? Please expel us all, because this BJP government has taken every rule, every structure that we had in this country and thrown it out of the window. So don't expect us to adhere to anything, and you quote us rule 275. What they did from the beginning was, the rule is, I came in, I gave my statement, then everyone's supposed to ask questions. Before anybody else could start, the chairperson had a 10 or 12 page list of questions. His line of questioning had nothing to do with the two main questions. Why have I been called? One is use of the NIC login, whether it's authorized, unauthorized, and the repercussions of that. That is one issue. The second issue is the purported cash and gifts that you can ask me about, which has been provided with evidence you can ask me about, which I'm perfectly willing to answer. Whichever question he asked me related to that, and he never asked any question related to that, his entire line of questioning right from the beginning was filthy and derogatory. It was a complete Bastra Haran. I mean, I don't even want to tell you all those questions. He says, you say so-and-so was a dear friend. Just how dear was he? And does his wife know how dear he was? And he named the wife. So our committee members stood up and said that you have no right when who the wife is, what that person is, how these are not members, these are not proceedings of a committee. Please stop this line of questioning. So then he says that, oh, she can answer no. So, and I want to ask you something on television, because we as women in this country have shied away from this. He's persisting with this filthy line of questioning, and he's saying, he says, oh, who do you speak to at night, and how long, what are your late night calls to, and can you provide us login details of who your late night calls are to? Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Co-presented by आपका जॉय भारत का जॉय जॉय ई-बाइक. Co-powered by Parul University, Vadodara, Gujarat. ये क्या खा रहे हो आप लोग सुबह सुबह? आलू भजिया. आलू भजिया सुबह सुबह? फास्ट ट्रेडिंग का डर तो है. छत्तीसगढ़ में घोड़ों की कमी नहीं है. घोड़े बिकने को तैयार हो सकते हैं. सीटें कांग्रेस की आएंगी, सरकार बीजेपी की बनेगी. ईडी आपके घर पहुंच जाएगी. पहुंचने दीजिए, स्वागत है उनका. Congress has to try hard to win back